He should have gone not to take that gunfight, not to like give his intel away. टीम में यहाँ पे जब एक और प्लेयर को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, बट टीम में 4 के एक प्लेयर आएंगे, उनको कर देंगे refrag, and it's going to be really hard for now the other team members from the team of 5 really get in that momentum. यहाँ पे एक long shot try तो जरूर कर रहे थे, but out of nowhere rising bot from the side of team 16 gets shot down, gets knocked down. रिवाइवल दिया जा रहा है वीटा की तरफ से, ताकि उस तरफ से कहीं ना कहीं एक असॉल्ट राइडर से बहुत ज्यादा एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ग्रेनेड का प्ले यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला फ्रॉम द साइड ऑफ RNG क्लच। ग्रेनेड अंदर जाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोना लैंड इन वेरी परफेक्टली एंड गोना कनेक्ट इट वेरी परफेक्टली टू गेट दैट स्पेसिफिक डैमेज इन द नॉक। But it's gonna be really, really crucial, and like I said, we have only 11 teams right now present alive. This circle, bhai, and सामने से लेके चले गए पिंगा को. It's gonna be a dual clutch if I'm not wrong. It's gonna take another guy if Devil God of knockout. It's gonna be team 16 जो उनको थर्ड पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं आने वाली की गाते खाते जाएंगे। वापस से एक इनिशियल एग्रेशन हमें देखने को मिला। उनके एक्टर ऑलरेडी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। Goes for the pre-fire, but not land perfectly. बगी को लगातार शॉट दिए जा रहे हैं, पिंगा को लगाएंगे, but it's gonna be another kill for ping high है to be very specific, and it's gonna be a clutch अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है कि नियॉन MVP यहाँ पे असॉल्ट राइफल से एक ADS ला के बैठे हुए हैं। जैसे पिंग हाई है निकलेंगे वहां से। अब पिंग हाई है या लो है वो मैटर नहीं करेगा, मैटर यही करेगा कि वहां पे आपको स्पेसिफिकली स्पॉट किया जाएगा और टीम में 4 शायद से यहाँ पे टीम में 3 के हाथों फिनिश ऑफ हो सकती है। It's gonna be 2 players। नियॉन पीछे आ चुके हैं। That's a right decision coming from the side of Nion. Got a 4-man squad up and running. That is Team CS up. And their teams, although they're outside the circle, they need to make it inside, but they've got a lot of enemies keeping an eye out for them. Team CE with last 2 players unknown and Janvi Aya are currently being kept by Haven's Ankur, and the grenade will be doing a lot of damage, but the player is not down yet, but even Ankur gets spotted out. That's beautiful knock coming in from Janvi Leva, and I'm looking forward that he gets the finish as well. We've not got much time until we see the last fight and the last finish off coming through, but remember, we've got a 1 team with 4-man standing. That is Team IMD. Aqua. Yep. Janvi Leva, and I'm looking forward that he gets the finish as well. We've not got much time until we see the last fight and the last finish off coming through, but remember, we've got a 1 team with 4-man standing. That is Team IMD. Aqua. Yep. अब जो वहाँ पे टीम एक्वा वहाँ पे प्रेजेंट है, they are gonna take the man advantage, बट जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक रिटर्न ऑफ फ्लैग्स देखने को मिला फ्रॉम द साइड ऑफ टीम जानलेवा की तरफ से, स्पेसिफिकली अगर मैं प्लेयर का नाम बोलूँ तो उनका एक प्लेयर नॉक था, उनको रिवाइवल दिया जा रहा था, स्मोक का उन्होंने प्रयोग किया, शॉट सा एक रैंडम थ्रू शॉट मारा था उन्होंने, एंड दैट टुक अवे द अपोनेंट प्लेयर्स लाइफ। ये एक काफी ज्यादा दिखाता है कि हाँ इस बंदे ने कितना गेम को खेला हुआ है, उनको साउंड क्यू किस तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे थे। बात करें स्पेसिफिकली यहाँ पे आईएनडी के दानव की तरफ से, एक्वा संभव कहीं ना कहीं नॉकडाउन जरूर प्रेजेंट है, बट एक रैंडम स्प्रे जाएगा, बट इस तरफ हो जाएंगे जानलेवा प्ले जोन के द्वारा एलिमिनेट। आईएनडी दानव यहाँ पे थोड़ा सा ग्रास के ही छुपे में बैठे हुए थे, बट with the high ground advantage, 4-man up and running, not much fight happening. The spider gets spotted out, gets taken down, will be getting confirmed shortly. That was a beautiful shot, a beautiful spray coming in from Hacker. I don't know how these players managed to get the spray so smooth without any effort. That tells a lot of I think about that play. उन्होंने like the time of amount they have put in the game, the time of the amount of experience they have with those guns, and that's it clearly that they have played so much of BGMI. उनको पता है कि किस तरह से किस एंगल पर वो शॉट कनेक्ट करना है। यहाँ पे यहाँ पे टीम एक टाइमर कॉल के शॉट करेगी, बट एग्जैक्टली वो चीज नहीं हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इसलिए को नॉकआउट जरूर किया गया, बट डेविल को यहाँ पे माउंटेन राइफल लेकर शॉट कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं क्योंकि प्ले जोन उनके अपने अगेंस्ट आ रहा है, नॉक जरूर हुए थे, बट किल कहीं ना कहीं किसी और तरफ मिलकर नजर आ रहा है। डेविल गॉड के अगेंस्ट फिनिश ऑफ एक जरूर मिला है। स्केलेटन को भी किसी भी वक्त हो सकता है स्पॉट जरूर कर लिया गया, बट उनको भी कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ कर दे, बट स्केलेटन वहाँ पे चुपचाप से पीछे बैठे हुए हैं। Still got vicious team with 3 players alive. होता है जो होगा नहीं हो सकता है यहाँ पे डैमेज देखने को मिले। टू बी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये होने वाली है कि दोनों तरफ से ग्रेनेड यहाँ पे सही तरह से कनेक्ट नहीं हो रहे। एक भी ग्रेनेड आता है और आगे जाएंगे शॉट करेंगे, बट ज्यादा एग्रेसिव हो गए एंड अपने आप को कहीं ना कहीं नॉकआउट कर लिया गया। अगर साथ में पुश करते तो ज्यादा बेटर होता है, तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ less coordination between these 2 players.
clear. But उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि टीम सैड को वही रहना चाहिए और हैकर को मूव नहीं करना चाहिए वो जगह से, because it's a 3v1 situation currently and he does not have the advantage. He just has to wait for the circle to play in for him and he's definitely doing that, but Fisha putting out the brain on the wrong place and on his teammate. Not a really way to चार्ज अप करते हुए नजर आ रही है और टीम में 40 सामने से राइट बहुत होगा थोड़ा सा मिस्टेक पर चढ़ो यहां पे अभी जरूर थोड़ा सा तो एक और प्लेयर के सामने आएगा आप थोड़ा सा फन वीडियो का पाप अपडेट फॉरवर्ड, बट यहां पे पूरी तरीके से यहां पे अग्रेसिव नेचर पे पुश ऑन कट्स की टीम में 40 माइट टीम और बहुत से पता नहीं चल रहा था स्पार्की को एक रैंडम शॉट लगा वहां पे प्रिंस गॉड हो क्या तरफ से और कंप्लीटली Yeah, it's gonna be really crucial for the team, but now यहाँ पे तरफ गलत है यहाँ पे काजल देखें गोला जानलेवा यहाँ पे ज़रा अग्रेसिव जाएंगे भी सी विलन को कहीं ना कहीं नॉक ऑन जरूर किया बट स्कल से यहाँ पे शॉट लेते तो नजर आएंगे इस बार अभी शॉट्स कमिंग फ्रॉम द साइड सी एनो जो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ या इट्स गोना बी 3 प्लेयर्स तो कहीं ना कहीं 2 प्लेयर्स तो कहीं ना कहीं स्कल की तरफ से नॉक डाउन हो चुके हैं। गोना बी द क्रूशियल वन विलन एंड द अदर वन प्रॉब्लम यहाँ पे जानलेवा अपने आप पे होल्डर के जस्ट पीछे होल्ड अप करके बैठे हुए हैं। डोंट नो व्हाई हंटर इज नॉट पॉपिंग के पास यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा जानलेवा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन गन स्किल एंड मूवमेंट का गेम प्ले एंड देखते ही आप स्कल की टीम फ्यूचर से सफर करते हुए नजर आ रही है। स्कल गोको पहले रखने वाले हैं वापस करने के शॉट कैच देखने को मिला एंड गोको गेट्स नॉक डाउन अननोन और जानलेवा sad. Ouch! That was an unexpected shot coming onto them. Unknown also gets spotted out. Receiving a lot of damage currently. The bot IGL is going to go back and then his teammate and looks like Existence is already in the action. He's going to take that vehicle, take a drop. He's going to confirm team Sarishan, but before he goes into the confirmation, his HP time soon since one of the players is already down to low HP. That's Ankur and Then we have Ankur, although he's back with the HP, but Eagle trying to go for a backstab, in turn gets backstabbed. Now these are the kind of fights I was looking for a beautiful initiative by the third party team coming in through Danav, although he's still trying to confirm the kill on Lincoln. On the other hand, Fisher is trying to get heat. Scorpio's team. I mean, one team is looking out for more than 2 teams currently in this situation. And well, trying to get those angles, get those shots connected, but it's gonna be the side of Donald. थोड़ा सा आगे आएंगे and damage भी देंगे, knock off भी कर लिया गया है। दूसरे टाइप को कहने के स्ट्रीट ऑफ फिनिश ऑफ करने की कोशिश रहेगी, सारी को कहने के फिनिश ऑफ कर भी दिया गया है। तो शॉट ऑफ द रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। रिवॉर्ड लाइक तो जस्ट रिवाइव दिया गया, बट डेविल गॉड ओपी विद दैट ओपी शॉट्स दाम को दिया है। नॉक हेवन अंकुर किस तरफ जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट करने के देखने को उनकी तरफ से मिल रहा है, बट एक बोल्डर पे अगर सही तरीके से नेट लग जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अपोनेंट के लिए। कि वो चार्ज अप करके जाएंगे, रिफ्रैग निकालेंगे, गॉड लाइक दुशाक जिनके बारे में बात कर रहा था कि इनके टीम के पास कोई भी फिनिशर्स ऑफ किल्स नहीं है। अब इनके पास देखिए 2 पॉइंट्स आ चुके हैं इनके खाते में। Skull. On the other hand, I guess he's laying low. Well, I think the energy has to be lit up right now since we are on the top 7 teams, and look at Scorpio's team here. Despite of them taking so many fights, only 2 finish in their hands, a little disappointing. But Chiragopi on the other hand is making it all happen for his team. Akash Gowda will go down, will get confirmed. Tushar on the other hand, the man with weapons in the need for speed, as you currently mentioned. A lot of close fights happening into Rabal on the other hand gets in. Well, I see this completely a different case. On this hand, Vortex once again, the one-man army which we saw previously in last man, but has 2 of his teammates, not 2 but 3 with Thrice also back on speed. He's currently very low HP. The circle's gonna be closing down. A beautiful Molotov coming in. See that addition gets 1, but he has to make it inside the circle with only last 2 players standing up for his team. He's down to very low HP. Sad bot IGL. He has to do all the hard work lifting for his team. Ragnar on the other hand, kind of down to low HP, path goes down, and so does Ragnar. Bot IGL is making it all happen for Team Sad. Is this finally gonna be the time that a chicken dinner will go into the hands of Team Sad Bot IGL? But with the man advantage coming in from Team 16, that is Vortex Blasty. Can they play out this round?
it's only top 3 teams, only 6 players alive, which of them 3 of them belong to Team 16. Only one man, that is Team Sadbot Ichil, along with his teammate, they are trying to currently survive the fight. And I think as soon as the circle starts to close in, it's a fight of the weapons. बिल्कुल able to see like B2K skull. If I'm not wrong, they are just he's the lone guy surviving. जिसको saddest on this. They're getting out of the place, but Team GD is just getting in the place. Billet. They are getting comfortable in the maps, and I guess they can be a little precautious before they go in for the pushes. Cartel putting out a beautiful nade won't do much damage, but it will at least try to gatekeep from the other teams. And look at the teams who currently have the high ground advantage. They're the only teams which might have a chance to take Team GD down. But on the other hand, we see Team 10 finishing off in the lowest. But Akash Gowda is back on feet, so never mind. I think we have 2 full squads ready still. Punya on the other hand trying to take down Villain and successfully confirms the kill, leaving it to 2 finishes. Okay, slow and steady. Punya's Baki Spiders, so that only 2 kills but 4 man up and running. I think by the time we come back to the top 4 teams, top 5 teams, we'll have only 2-3 squads fighting off. I'm pretty sure कि यहाँ पे ग्रेवेज वैकेंट छोड़ना पड़ेगा. आपके पास कोई चारा नहीं बचा. प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे स्कल गॉड की टीम ऑलरेडी यहाँ पे टीम प्रेजेंट होगी. आपको गेट करने के लिए इस ब्रिज पे अब ये फाइट किस तरफ कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न करती है, किस तरफ जाती है, किस तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा डैमेज होता है. गोल्ड गॉड का ज़्यादा डैमेज ले लेंगे. तो रियली क्रूशियल फॉर स्कल टू इवन नॉक 1 प्लेयर आउट, क्योंकि 3 को टच आ रही है. अगर एडवांटेज मिल जाता है डेविल गॉड ओपी की टीम को, टीम नंबर 5 को, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा स्कल की. जब आप अनमोल की तरफ ही कहीं कहीं चार्जर प्रेजेंट वाला स्पॉट करेंगे, नॉक भी कर देंगे. व्हाट अ लवली स्प्रे कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ बीएल चिकागो ओपी. अब उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती की कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट ऑन ले रही है, तो शायद से एक थर्ड पार्टी हमें देखने नजर आ रहे हैं. बट उनके लिए अब हो गई है सिचुएशन आगे कुआं पीछे खाए वाले की. पीछे यहाँ पे आपको टीम 14 गेट कीप करने के लिए बैठी है और आगे कहीं ना कहीं वहाँ पे स्कल की टीम बैठी हुई है. Let's see what kind of plays इस टीम्स के बीच में देखने को मिलता है. बट हाँ, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो ये really crucial fight between these players. वहाँ पे स्टील के प्लेयर्स गॉड ओपी को स्पॉट कर लेंगे जो रोटेशन ले रहे थे. रोटेशन कट ऑफ हमें देखने को मिला है स्टील के टीम की तरफ से. अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. किल्ला बस यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा कम एचपी पे, इज डाउन टू लाइक से 5 एचपी. डेविल गॉड ओपी ऑलरेडी यहाँ पे कहीं कहीं नॉक पड़े हुए हैं. गॉडल तुषार इस तरफ कहीं पानी में अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं, तो दे आर नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन. जानलेवा आगे आएंगे, अपने आप को निकालेंगे, कहीं ना कहीं नॉक जाएंगे. उस तरफ तीसरे प्लेयर कहीं ना कहीं सी के आ चुके हैं, उनको चैलेंज करने के लिए डैमेज दिया, वापस कहीं ना कहीं नॉक कर दिए जाएंगे. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स गोना बी सिंगल हैंड प्लेयर. टीम नंबर कहीं ना कहीं 5 के जो कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, पुश ऑफ कर दिया केरला वासी को. 2 फिनिश ऑफ कहीं ना कहीं सी के तरफ से मिल चुके हैं. लेट्स सी व्हाट टीम यहाँ पे रोहित एक्सट्रीमली सॉरी ग्रेट कुक कर रहे थे तब तक, और जी हैकर इस लोकेशन पे आ चुके हैं. यहाँ पे सोलो भी नॉक है, सोल्जर भी नॉक है. इस तरह चराओ भी ताजब किया गया को समझ में वापस उनको नॉक करेंगे. अंकुर को भी नॉक कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1v2 कर दिया है. 1v4 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है. दानव को भी नॉक कर दिया. What? A 1v4 coming in from the hands of Chirag. 25 seconds before the last circle hits in. That is the 8th circle. Akash Gowda has made a move. Victrial is still standing in the same position. Akash Gowda putting out smokes, trying to go out. Goku is not even daring to take a peek. Nobody has any clue where Goku is. 5 seconds before the circle starts to close in. I really want to know if Goku can clutch a 1v2 situation, because if Goku goes ahead and clutches it out for his team, it is one of the best clutches at least I've seen so far. The circle will start to close in. I think in the next 1 second, there's no way that Goku can pull this off. Akash Gowda's position has been spotted away. Goku, it's time that he takes the fight, but Halish is already gatekeeping. For Goku, the circle's closed in. Goku is not inside the circle, gets spotted out. It's